As we start, I think my first question to you would be, we've seen this comprehensive presentation on the impact that's been made by the Make in India movement. In your capacity as a leading entrepreneur, as well as your capacity of being a judge on the very popular show Shark Tank India, where you've seen multiple startup ventures and interacted with multiple startup entrepreneurs, how is the concept of Make in India helping new startups or businesses today? When we were starting up, entrepreneurship and founders were not like looked up to. Okay? We were not, even doing business was looked at negatively, right? It was not supposed to be as it is now. If you look at 2023, now entrepreneurship is being celebrated. Entrepreneurs are being celebrated. I think it's for us. I have seen in last 6-7 years a complete change on how startups, founders, and entrepreneurship is being looked at. पहले तो I don't think पहले लोगों को entrepreneurship की spelling भी आती थी, मुझे भी नहीं आती थी ठीक से, right? So और जब हमने start किया ना, तो even my mother-in-law who's also in Greater Noida, right? My in-laws are here. So my mother-in-law also said कि यार why are you leaving? I was doing very well. तो ये था कि यार अपना काम क्यों छोड़ रहे हो? Why are you starting up when you are अपना काम क्यों शुरू कर रहे हो? अच्छा वाला तुम्हारी नौकरी है, इतना अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो छोड़ने का क्या point, right? So business was not like as good, but look at it today. There are so many startups everywhere you go. आप कहीं भी किसी college में चले जाओ. In fact, even in your college, I was talking to your professor and he was saying कि यहाँ पे Atal Innovation Mission है. Your college is like one of the top 5 colleges in that, right? This college is. So look at entrepreneurship. आप किसी cafe चले जाओ, किसी restaurant चले जाओ. आजकल लोग टेबल पे बैठे होते हैं और आपस में लोग ये सोच रहे होते हैं कि नया क्या वेंचर स्टार्ट करना है, right? And it's couldn't have been better time to start up than now in India, right? So I tell everybody who's planning to start up that do it before anybody else does, because I think there are a lot of people who are talking about starting up everywhere you go. किसी भी जगह चले जाओ तो भाई जिससे पहले कोई और शुरू करे, क्योंकि आइडिया ऐसा नहीं है कि आप ही के पास आता है, आइडिया सबके पास आता है. It's also about taking the plunge and getting into the startup world as soon as possible. So for me, one thing which I would say is do that today. Second, for us, when we started, we were called as even Indian brands for that reason were not very acceptable. Okay? I had to compete with Chinese, Japanese, German brands, US brands when we were starting in India. India में Indian brands की इतनी respect नहीं होती थी जितना फिरंगी brands की होती थी. तो पहले तो we fought a war with the people that boss with the other brands that boss Indian brands can also produce good quality. Indian brands can also be accepted. And the best part was consumers were changing. अब consumer खुद Indian brands की तरफ जाने लगा 6 साल पहले. 2 साल पहले एक और revolution आया इंडिया में, where Make in India with the schemes, with the push of the government, now consumers themselves keep asking कि boss आपका brand तो Indian है लेकिन आपके products तो चाइना में बनते हैं. Consumer खुद मतलब इतना अच्छा एक अंदर से इतनी अच्छी feeling आती है कि now consumers are themselves also asking कि यार हमें Make in India brand चाहिए, right? So we had to go into that path also. Second, if you look at manufacturing, लोग ना डरते थे. मुझे बहुत डर लगता था मैन्युफैक्चरिंग से यार कि लेबर को कैसे संभालना पड़ेगा, क्या होगा, कैसे संभालेंगे, डर लगता था. वो होते थे ना लेबर लॉस भी वर नॉट लाइक एज कंड्यूसिव कि क्या हो जाएगा. अभी तो नाउ पीपल लाइक अस, एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस आर आल्सो ड्रीमिंग कि कैसे हम हाउ कैन वी go to the next level. मैं बताता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि we as boat will be loved so much that now we are world's second largest wearable brand. Second largest. Wow. I think a lot of us sitting here can say we are all proud boat owners. Yeah. जो नहीं है वो please बाहर चले जाना.
मैं मतलब in 6 years, right? And I always say that in India today we all should dream big, right? If I and I was 3 years back, I was sitting as one of you, right? And in 3 years, मैं वहां से यहाँ आ सकता हूँ, तो आप में से कोई भी यहाँ वहां से यहाँ आ सकता है. And that is the potential which India has for all budding entrepreneurs. Thank you very much. I think काफी इंटरेस्टिंग एंगल्स और काफी इंटरेस्टिंग चीजों का हमने बात की है, जैसे कि द चेंजिंग माइंडसेट. इनफैक्ट इफ वी रिवाइंड बैक अ कपल ऑफ इयर्स, वी हैव डॉक्टर चतुर्वेदी जी सिटिंग हियर विद अस. पहले कोई बिजनेस चालू करने जाता था, सम फर्स्ट टाइम फर्स्ट जनरेशन बिजनेस वाला, तो द ऑब्जेक्टिव कि अच्छा दुकान लगा रहे हो आप. So I mean, there's a huge, gravitational shift that we have gone through. But I would like to personally know from you, Amanji. I mean, you're an accomplished chartered accountant. Like you said, you were doing these top jobs in sales and marketing in some of the leading companies globally as well as in India. What was your personal motivation? How did you decide to take the plunge? From a chartered accountancy to this, right? Yes, and to actually become an entrepreneur. So I was, have you seen Three Idiots? हाँ Yeah. जी, सबने देखा. तो उसमें वो बोलता है कि उसके मतलब उसके फादर डिसाइड करते थे, राइट? तो एक टाइम पे कि क्या बनना है, राइट? तो मेरे साथ भी यही हुआ था. वो बोलता है ना, इंजीनियर बनेगा बेटा, डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा. So it was more about, my father wanted me to be a CA, and that's why I became a CA. And I think it always helps कि एक बारी CA जब मैंने करी, तो it's not an easy course, tough course है, right? और CA में हमारे को ना एक टाइम होता था जब मैं 18 घंटे दिन में पढ़ता था, राइट? ये CA में क्या होता है, सुबह तुम्हें क्लासेस जाना पड़ता है, और फिर पूरा दिन का इंटर्नशिप होती है, और फिर शाम को क्लासेस होती है, राइट? तो इट्स अ स्ट्रेसफुल कोर्स, राइट? बट सीए करने से ना बहुत चीजें सीखने को मिल जाती है. पहला तो टाइम मैनेजमेंट इज गुड, एंड आई लर्न दैट. सेकंड, आई थिंक सीए बन के आरओआई मैनेजमेंट आ जाती है, राइट? तो इफ यू लुक एट आवर कंपनी, वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी, राइट? बट many companies are not, मतलब our DNA is profitable. Maybe हम एक साल लॉस करें, but ROI management, time management, I think as an education I always say कि यार पढ़ाई करना, आप MBA कर रहे हैं, you guys are MBA, doing your MBA और PhD courses, right? तो इसमें भी क्या होता है कि आपको ओवरनाइट बोल देते हैं कि 2 दिन में ये केस स्टडी पढ़नी है, ये ग्रुप्स बनाने हैं, फिर आपको सबमिट करना है, फिर आपको इंटर्नशिप करनी है. सो आई थिंक ऑल दीज कोर्सेज helps one become much better. I think education helped me there. And for me, I always loved gadgets. तो मेरे को gadgets बड़े पसंद है, तो मैंने ऐसी JBL में अप्लाई किया. JBL is another supplier. They also make some decent products. Don't buy them, but yeah. So Smooth. I learned a lot from them, and then I started both. Wonderful. So, Amanji, in what ways is board contributing today to the Make in India initiative? And what is your vision for the company's role in the country's electronics manufacturing sector? As you know, we are gearing up now to become the third largest economy in the world. So, how is board going to be contributing to this journey? Boss, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ना मतलब मैंने सोचा नहीं था फ्रैंकली कि हम लोग इंडिया में बनाएंगे, करेक्ट? क्योंकि इंडिया में बनाना बड़ा मुश्किल होता था. But there were so many schemes, like we got, there was a scheme called Production Limb Incentive, PLI. उससे पहले ना हमारे यहाँ क्या होता है, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इंडिया में बनाना ना इजी नहीं है, मतलब इंडिया में बनाना बहुत टफ था. हमारी ना गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करी. इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टार्टेड टॉकिंग टू अस कि बॉस तुम लोग इंडिया में बनाओ, राइट? हमने बोला सर बहुत महंगा है, हम लोग अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, बाकी ब्रांड्स जो बाहर से ला रहे हैं वो सस्ते होंगे. तो बोला नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, स्टार्ट मेकिंग इन इंडिया. आई टेल यू आवर जर्नी. वी स्टार्टेड 3 years बैक, वी मेड 0% मेड इन इंडिया, 0, राइट? 2023, 70% of our products are now made in India. 70%. Truly amazing. And it is, and we are, we are on the path to make 80 to 85% made in India, right? And this is only because there is a lot of support which the government has given us. There is a lot of,
I would say, even the smaller parts, like if you look at how semiconductors are now being made in India, right? There was a company called Micron which has started their own factory 3 days back in India. So इंडिया में ना, जैसे जब भी मारुति भी जब स्टार्ट हुई थी ना, तो आपको याद है कोई पंजाब में कोई एक वो बनाता था, कोई स्टेयरिंग की फैक्ट्री होती थी, किसी की ब्रेक की फैक्ट्री होती थी, तो ऐसे ना छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनी थी। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि आई ऑलवेज से, यू नो, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इंडिया विल नॉट मेक इन अ डे, इंडिया इज इन दैट path to make in India. एंड धीरे धीरे ये फैक्ट्रीज आ रही हैं, कंपोनेंट प्लेयर्स आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर प्लेयर्स आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इंडिया भी, यू नो, इट विल बी अ ग्लोबल पावर इन मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक, what do you call it, the China plus one strategy, and India is the best poised to get that, to take that opportunity. And I think no better time than now to start making in India. I think like we say, यही समय है, सही समय है, यही इंडिया का समय है. So, one of the things that you spoke about was also the ease of doing business, right? And a lot of people say that that has been one of the contributing factors, that in a record time of 7 years, we have become the third largest, so to say, startup capital of the world. If you could tell us, practically, what have been, the reforms that you have seen actually have benefited businesses like yours, and have actually contributed this exponential growth that we have seen in the startups in the country. जैसे presentation में देखा, right from 350 we have made the jump to 1 lakh plus. So what has this journey been like? I think India में अगर, if I talk about electronic manufacturing, there is a $300 billion electronic manufacturing target India has taken, and we are on the path to do that, right? आपको India is now the second largest mobile manufacturer in the world. Imagine. And 4 years, 5 years back, we didn't even do anything. इस पे थोड़ी ज्यादा तालियां बनती हैं. All of us are using mobile phones here. मतलब इतनी अच्छी, मतलब अंदर से यार, पता है, अंदर से अच्छा लगता है जब अभी जो परसों लॉन्च हुआ आईफोन 15, राइट? और दैट आईफोन 15 is now made in India and available at the same time when it is available. पहले होता था 2-2 महीने बाद आ रहा है इंडिया में, वेटिंग लिस्ट चल रही है, लोग दुबई से या कहीं से ला रहे हैं, राइट? अभी सेम टाइम पे इंडिया में मिल रहा है, जिस टाइम पे ग्लोबली मिल रहा है, and that product is also made in India. What else do you need, yaar? It's something which is, which some people say that, you've dreamt about it. I didn't even dream about this India, where Indians will have proud feeling to buy Indian brands. Indians will be proud to buy made in India products. Like it's I think a surreal times where, where we are feeling Indian, right? It's couldn't have been better. I think you're absolutely right that now there's been a tectonic shift in the mindset that now we're so proud of the fact, and we're proud to buy products from a country. Gone are the days when we were always looking out for those foreign products. Now we proudly say that we want to invest in Make in India and Made in India products. While we're talking about surreal times, how can I not ask you about your experience? Very recently, for our students, dear students, I'm sure you would have all seen this in the national dailies. Aman ji, sitting right here, had the opportunity of joining the Honorable Prime Minister in a delegation that went to Paris, France, for the Indo-French CEO forums. We would love to hear about that experience from you. How was it to interact with him, and what was that experience like? I think, it was a surreal moment, right? I never, हम लोगों को याद होता था जब normally, जब भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर जी के ट्रिप्स होते हैं, तो देर आर, you can count and say कि यार ये बिजनेसमैन होंगे जो नॉर्मली इंडिया के बिजनेसमैन है, राइट? और अब हमारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स को भी आर गेटिंग इनविटेशन, राइट? इससे अच्छा टाइम क्या होगा कि हमारे को भी मेरे को, मतलब सेकंड और थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते थे, फैमिली बिजनेसमैन होते थे जो जाते थे, राइट? आप ये सोचो कि मैं जब वहां गया ना, इट 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 हैज ओपन्ड द ड्रीम्स फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस कि यार अगर अमन जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं, राइट? क्योंकि वहां पे जाके जब उस टेबल पे बैठा हूं, तो देयर वाज अ बिजनेस डेलीगेशन, पूरा पूरा बिजनेस डेलीगेशन बैठा है. There are Airbus CEO, and there were a lot of these French companies, and Indian companies over there, and they were all talking. Some were saying that
I have 6 factories in Europe. Somebody was like, my business is there for 6 decades. And there was me, who's a startup founder, whose company is only 6 years old, right? And as a founder, I felt, and I was sitting there and I felt that, boss, ye, kya bolte hain, it's India's time has come, and that's what I wrote about in my Instagram and LinkedIn post, that अब ये टाइम आ गया है कि, मतलब हमें याद है, मैं वहां गया ना, जब हमें याद है कि हम लोग जब फ्रेंच ब्रांड्स होते हैं ना, इट्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया, राइट? तो मैंने वहां पे जब स्पीच दी तो मैंने यही बोला कि एज इंडियंस वी लव फ्रेंच ब्रांड्स. Now I represent the new India. I represent the young India, which is very aspirational. I represent an India which wants to take over the world, take on the world, right? I represent an India where I feel that we want French people to start loving Indian brands also, right? Why can't it be possible? मतलब मेरा तो इतना मन करता है कि जैसे जब एप्पल फोन आता है तो एप्पल की दुकानों के बाहर लाइन लगती है, राइट? इंडियंस लगाते हैं. ऐसा भी टाइम आना चाहिए कि हम बाहर जाए और बोट के शॉप्स के बाहर लाइन लगी हो, राइट? और फिरंगी लाइन में लगे हो, राइट? कि तो यू नो I would say that Indians have now lately Indians have started dreaming big, right? I remember first, as I said, our brand was made in India, right? Then with the help of government, now we are making in India. And now I remember Modi ji once said, let's make in India for the world, right? इंडिया कभी ये नहीं सोचती थी कि हम क्यों नहीं ग्लोबली बना सकते, राइट? अगर आप, मैं तो सिंपल कहता हूँ कि अगर आप स्टारबक्स को देखो, स्टारबक्स है क्या? एक चाय की दुकान ही तो है, राइट? और बट दे यूज्ड टू थिंक ग्लोबल, दे यूज्ड टू थिंक बिग. And now look at them, that they are like, in India also they are doing well. If you look at Walmart क्या है? बनिए की दुकान, right? But 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 they have thought big, right? They used to think global, and now they're doing so well in India also, right? So why can't we? So I think that limitation is getting over, that इंडिया नहीं कर सकती. अगर आप आज देखो, जैसे G20 इवेंट हुआ, और इंडिया की जो, मतलब जब मैं पेरिस भी गया, G20 इवेंट भी देखो, और वहां पे जब आप देखोगे ना कि फर्स्ट टाइम in 50 years there was a dinner hosted by the French government for for Prime Minister Modi, right? In this one, क्या था, Louvre. First time after 50 years. Last was British Queen. After that it was our Prime Minister. Imagine. Imagine the respect India has now globally, right? So all these efforts which the government is making is helping entrepreneurs and startups like us go beyond, think broad, think beyond India, and make for the world. Absolutely. I think the example that Amanji gave in the end is a true testament to the fact of, our rising global stature. And obviously, we all witnessed it right here with the G20. Did you all not feel proud during the G20? Absolutely. I think Amanji ने काफी interesting points बोले कि जैसे this is aspirational India. Each one of you sitting here, carries a big dream. All of us are now no longer just thinking about that roti, kapda, or makan. We're actually thinking beyond. Wanting to do something impactful, bring a change to the world. And like he said very correctly, that we want that our country should now take over and we should be able to reclaim our place again as a leading superpower. Having said that, so many of the students sitting here also must have entrepreneurial ideas. उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? I think मेरे को लगता है कि जब अगर स्टार्ट करना है तो बॉस, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है कि बी रेडी टू हसल, राइट? यू हैव टू हसल हार्ड. इट्स नॉट इजी. लगता है इजी है, बट हमने भी, मतलब सबने बहुत पापड़ पेले एज एंटरप्रेन्योर्स. यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड. सेकंड, क्या होता है ना, कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स जब अच्छा करने लगते हैं स्टेज 2 में, वो ना दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक गॉड्स, राइट? I think staying humble is one of the virtues which I have, which I feel that all entrepreneurs should have as one of the traits. So, and third, most important, boss, ROI का ध्यान रखना. वो दिन चले गए जब startups में, आज बाइजूस का भी आया था that they are removing 4,000 people, right?
वो दिन चलेगा ही कि जब आप फ्री में पैसा मिल रहा था और कुछ भी हो रहा था, यूनिकॉर्न वगैरह बन रहे थे, आई स्टिल फाइंड यूनिकॉर्न, वो बोलते हैं ना, मिथिकल क्रीचर है, राइट? इट्स स्टिल नॉट लॉजिकल. तो मुझे लगता है कि इट्स गॉन आर दोस डेज वेयर फ्री मनी वाज अवेलेबल फॉर स्टार्टअप्स. नाउ स्टार्ट थिंकिंग profitability, and that is that, and the DNA of everybody and every entrepreneur who's starting up is to look at ROI driven sustainable growth. Thank you very much. अब मेरे questions तो खत्म नहीं होंगे, but I have to give the students a chance who have been itching to ask a lot of their own questions. Yes, can we have the first question? पहले mic पहुंच जाए, please. Okay, quite a few questions, Aman ji. How does one soar high while remaining grounded? How do you grow? How do you scale up your business while staying true to your mission statement, your core values? How does one achieve that? मतलब मतलब कि जैसे या जैसे हिंदी में पूछ. मतलब जैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हो, जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपने जो पहले सोचा था कि हाँ ये अपनी वैल्यू है, ये हम रखते हैं अपने साथ यहाँ पे, वो सब आप कैसे मेंटेन करते हो? यार पता है, जब ग्रो करते हैं ना लाइफ में, तो बहुत बारी ऐसा आता है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु स्टार्ट कमिंग इनटू द कंपनी, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच स्टार्ट हैपनिंग, बट इफ यू डोंट स्टे ट्रू टू what you feel like, right? If you don't stay true, then the world will see you through, right? आपका ना अभी क्या हो गया कि कंज्यूमर को ना पहले आप क्या बोलते हैं, आप कुछ भी बोल के कुछ भी बेच सकते थे. अभी क्या है, इट्स एवरीबॉडी इज टॉकिंग टू ईच अदर, एवरी कंज्यूमर is on social media, every consumer is writing reviews. So like if you are true to yourself, you will do well, right? If you start acting, if you start trying to cheat the consumer, they will read through you, and they will buy somebody else, or they will not prefer your products over the others. So being true to your values is, I think, most important. सबसे मतलब हमने भी अपने ऑफिस में, हमारा एक होता है जुगाड़ू, डिसरप्टर, हसलर. तो ऐसे हमारी 3-4 वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं, और जब कोई आता है उसको मतलब आते जाते दिखता रहता है, इतनी बार दिखता है उसे कि उसको भी रट जाता है, तो हम उसे मिस नहीं होने देते. सो इट्स वेरी क्रिटिकल टू स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज मैन. What about technological investment that need there should be a technology investment to upgrade our phones, like camera के लिए investment चाहिए, उसके हिसाब से phone और demand में होते हैं. Day by day technology is changing and the rate of investment is not increasing. So what's the factor that should drive increase in investment so that the technology should be upgraded and Indian companies should be benefited from that? यार इंडिया में, आई डोंट एग्री टू योर क्वेश्चन. इंडिया में तो इतनी टेक्नोलॉजी, अब इंडिया से तो सारे, अगर आप देखो गूगल का सीईओ कहाँ का है, इंडिया का है. और माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया का है. अडोबी का इंडिया का है, राइट? मास्टर कार्ड का इंडिया का है. तो इंडिया से तो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे यार लोग, और इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट तो लोगों का होता था, राइट? वही टेक्नोलॉजी बनाते थे. अब इंडिया में कितना कुछ हो रहा है यार. ये देख, अभी तू हमारा सोच, अगर मैं छोटा एग्जांपल दूं, पता है world's first Dolby enabled neckband was made by Boat. World's first, right? मैं तो फिर भी बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? अगर तू नॉर्मल देखे कि सबसे ज्यादा ये हमारा चंद्रयान मिशन, द मोस्ट लॉजिकल प्राइस्ड मिशन फ्रॉम द वर्ल्ड, first mission to reach the south of the moon is ours. So India now finally is opening up our technology powers and not selling it or sending it to the global world to use. अभी तो इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं यार हम लोग. अगर तू साइंस में जो जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो रहा है, बैंगलोर में देखेगा तो इतने R&D हब्स खोल रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इतनी फैक्ट्रीज खोल रही है. तो धीरे धीरे होगा, राइट? अभी हर चीज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक साथ तो होगा नहीं. धीरे धीरे ये सब डेवलप हो रहा है. पूरी वर्ल्ड की बैकएंड सब इंडिया में ही तो होती थी पहले. सारी सबकी आउटसोर्सिंग कंपनीज इंडिया में ही तो होती थी. अब ये सब हम अपने लिए यूज करेंगे रादर देन सेंडिंग इट आउटसाइड. बहुत बारी तो मैं ये देखता था कि प्रोडक्ट बाहर मिल रहा होता था, जिसका बैकएंड सब इंडिया होता था. अब इंडिया में ही मिलेगा और इंडिया में ही बैकएंड होगा. तो मतलब लग रहा है ना टाइम. मतलब अगेन आई सेड, लाइक जैसे एक ना मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला था कि इंडिया इज नॉट लाइक फाइटर जेट जो रोज ऐसे चले जाए. इंडिया इज लाइक अ ट्रेन, मूव कर रहा है, अपनी पेस पे कर रहा है और मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो सब साथ जाएगा.
correct? So it will take time, and as I said, and I'm repeating it, our time is now. Very true. I mean, I think, this is the journey that we are making from Amrit Kal to Swarn Kal to become a developed nation by 2047. So, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका बिमटेक में. I just copied this from your Instagram post. My name is Gargi Devedi and I have a different kind of question. So I want to ask, how should any student stay consistent after facing a lot of failures in one way or the other? गुड क्वेश्चन. एंड जिनको नहीं पता तो ये पता क्या था, ये ना ऋषि सुनाक G20 के लिए इंडिया आए थे. अब तो हम प्राइम मिनिस्टर भी एक्सपोर्ट करते हैं ना. ऋषि सुनाक जब इंडिया आए थे तो उन्होंने बोट का हेडफोन पहना हुआ था. तो उनकी एक पोस्ट थी जिसमें बाय चांस मुझे बोट का हेडफोन दिख गया. तो वो फोटो लेके मैंने अपने इंस्टा पे डाला था, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसा करके. तो उससे आया था ये, राइट. तो यार मेरा एक सिंपल टेक है इसके ऊपर कि फेल तो फेल तो होना बनता है, राइट, थोड़ा सा, राइट. और अगर आप जैसे वो टॉप के जो सबसे फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं ना, उनकी जर्नी देखो और बाकी लोगों की देखो. तो जो बाकी लोग होंगे ना, उन्होंने ज्यादा अच्छा करा होगा रादर देन फर्स्ट और सेकंड जो आए होते हैं, राइट. अगर आप मेरा देखो तो अगर आप मेरा एग्जांपल देखो तो मैं स्कूल में, हमारे ना हेड बॉय होता था. मैं नहीं था, मतलब हमारे स्कूल में हेड बॉय होता था. और हमारे स्कूल में फिर हाउस कैप्टन होते थे, प्रीफेक्ट होते थे. मेरे को तो आज तक क्लास मॉनिटर भी नहीं बनाया, राइट. मैं तो कहता हूँ कि, और इवन इन आवर कंपनी, इवन इन माय लाइफ, दिस इज नॉट माय फर्स्ट स्टार्टअप. ये मेरी 5वीं स्टार्टअप है. पहली 4 फेल हो गई, राइट. बट लोगों को फेलियर से ज्यादा मेरा एक सक्सेस याद है. मैं तो कह रहा हूँ 10 फेलियर भी हो जाए तो चलेगा, एक सक्सेस होना जरूरी है लाइफ में. बाकी फेलियर सब भूल जाते हैं, लोग सक्सेस की बातें करेंगे, राइट. और फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तो कह रहा हूँ फेल होना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक फेल नहीं होते ना, तब तक सक्सेस की वैल्यू नहीं आती, राइट. और जितना मेरे को फेलियर ने सिखाया ना, उतना मेरे बिजनेस स्कूल ने भी नहीं सिखाया. मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ट्राई, फेल, because the best learning is from failures rather than success. Okay, one last question before we close the session. Last question. हेलो मिस्टर अमन. हम लोग अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिमटेक से है. Okay. और आए दिन हम लोग कई सारे स्टार्टअप्स को इवेल्युएट करते रहते हैं और कई सारे न्यू आइडियाज को हम लोग इवेल्युएट करते रहते हैं. आपके बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपने कई सारे स्टार्टअप्स को देखा भी है. आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सी होगी जहां से हम लोग मैक्सिमम स्टार्टअप आइडियाज देखेंगे और जो नेक्स्ट इकोनॉमी ड्राइव करेगी और डिस्ट्रप्शन देखने मिलेगा? मैं नहीं बताऊंगा. अच्छा जी. तो आई थिंक यार, मेरे को लगता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी बिग. हेल्थ टेक इज आल्सो गोइंग टू बी बिग, बिकॉज अभी क्या था ना, पहले हेल्थ पे इतना फोकस था नहीं इंडियंस का. अब आई थिंक पीपल वांट टू बी मोर हेल्दी, एंड इफ यू लुक एट health tech, that's an emerging sector. And AI also, I think it will, there are so many things which are happening mid journey mein or Adobe ke sath bhi. So I think that is one area where there was another term I learned. It's called prompt engineer. Have you guys heard of it? Right, people are now becoming prompt engineers. And if you ask 1 year back, people didn't know what prompt engineer term meant, right? Electronic engineer, computer engineer suna tha. Now it's a prompt engineer, which is also becoming like. So I think AI will be a big thing, and health tech, to answer your question. With that, we will have to come to an end on the question and answer. What a wonderful session it has been. I think I won't be wrong in saying this. All of us stand enriched, inspired, and I hope कि 50% से at least 75 to 80% अब सोच रहे हैं कि भाई हमें भी कुछ बनाना है, खुद का बनाना है, कुछ करना है, देश को आगे लेके जाना है. सही समय है,